Hello students, welcome. This is the rapid revision series where we will be taking each chapter in a very fast manner. So the first topic which we will be taking here is hypertension in pregnancy. The first topic which we will be talking today is hypertension in pregnancy. So what do you actually mean by hypertension in pregnancy? When blood pressure increases more than 140 by 90 and there are two readings, okay, 140 by 90, there should be two readings and two readings should be 4 hours apart. 4 hours apart, then you say patient is hypertensive. Now hypertensive, when patient is hypertensive in pregnancy, there can be either gestational hypertension. Gestational hypertension means hypertension has been diagnosed first time at more than 20 weeks period of gestation. That is, after 5th month of pregnancy, if patient is diagnosed to have blood pressure of more than 140 by 90 on two occasions and 4 hours apart, we will ask the patient to follow up after 4 hours and again BP is raised, then we say it is gestational hypertension. Now with gestational hypertension, अगर patient को proteinuria है, proteinuria means protein excretion is there in urine. Now how much of protein must be excreted in urine? Then we say proteinuria. It is in 24 hours urine sample. If we ask patient to collect 24 hours urine and in 24 hours urine it is more than 300 milligrams of protein, then we say it is proteinuria. But all patients cannot collect urine for 24 hours. So we can have a bedside dipstick test. Bedside dipstick test, it is instantaneous test. मतलब यूरिन सैंपल थोड़ा सा लेना है, उसमें डिपस्टिक डालना है एंड डिपस्टिक इज +1 or more. Okay, more than equal 1 plus means it can be either 1 plus, 2 plus or 3 plus. Then it is equivalent to more than 30 milligrams per deciliter of protein. Then we say it is proteinuria. So either of it, if it is there, then we say patient is diagnosed to have proteinuria. So if patient is having high BP, that is gestational hypertension plus proteinuria, then the diagnosis is preeclampsia. So what actually is preeclampsia? Preeclampsia is raised BP more than 140 by 90 on two readings 4 hours apart, plus patient is having proteinuria. It is called preeclampsia. Now there is another terminology called severe preeclampsia. What do you mean by severe PE or severe preeclampsia? Severe PE is when the blood pressure is more than 160 by 110. Okay, 160 by 110. Now this is a very high reading. So when patient is having 160 by 110, then also we have to repeat the reading, क्योंकि एक reading पे कभी भी patient को hypertension नहीं बोलते हैं. Might be patient has come running, या फिर बहुत उसी समय डर गई, patient white coat hypertension हो गया, so you cannot say कि patient is hypertensive. So we will repeat this BP after 10 to 15 minutes. And if the second reading is also more than 160 by 110, we tell the patient is having severe form of preeclampsia. So there are two forms of preeclampsia. One is only preeclampsia without any severe features, and second one is severe preeclampsia. Mild, moderate, severe नहीं है. Very important. Only preeclampsia and severe preeclampsia. So severe preeclampsia, BP has to be repeated in 10 to 15 minutes. If it is still more than 160 by 110, we say patient is having severe preeclampsia. Now these three terminologies, that is gestational hypertension, preeclampsia and severe preeclampsia, all are occurring at period of gestation more than 20 weeks. 20 weeks के beyond हो रहा है, मतलब 5th month of pregnancy के beyond हो रहा है. But if the BP rises in pregnancy at less than 20 weeks, irrespective of उसका BP का reading कितना भी है, अगर वो less than 20 weeks में rise हो रहा है, then we say it is chronic hypertension. Okay, chronic hypertension. And if a patient of chronic hypertension, if she later on develops proteinuria also, if she is detected to have proteinuria, that is protein content in urine in 24 hours more than 300 milligrams or +1 in dipstick or more than 30 milligrams per deciliter, then we say chronic hypertension with
superimposed preeclampsia. Okay, with superimposed preeclampsia. Okay, so preeclampsia terminology is used whenever there is proteinuria. Now always remember, whenever patient is having severe preeclampsia, there are some signs which are visible. Okay, apart from high BP, other signs which are available in severe preeclampsia which are visible are: number one, patient can have thrombocytopenia. Patient can have thrombocytopenia. Okay, now why thrombocytopenia is occurring? This is because blood pressure is very much raised. So what happens, the megakaryocytes start breaking. Okay, the megakaryocytes, जो megakaryocytes है, they start breaking into platelet fragments. So they become platelet fragments. Okay, so the platelets gets destroyed. Once the platelet gets destroyed, then the platelet count decreases. So thrombocytopenia less than 1 lakh. Okay, 1 lakh is a sign of severe preeclampsia. Normal platelets कितना होता है? 1.5 to 4 lakhs. 1.5 to 4 lakh is the normal platelet count in any individual, even in pregnancy. But when it decreases to less than 1 lakh, then we say patient is having severe preeclampsia. Severe features के signs है. नंबर 2, पेशेंट का RFT डिरेंज हो जाता है. इन रीनल फंक्शन टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन इज समथिंग विच इंक्रीजेस. So if the serum creatinine is more than 1.1 milligrams per deciliter, then it is a sign of severe preeclampsia. Number 3, coming to liver function test. Liver function test also become deranged in pregnancy. So if the OTPT, that is AST ALT, alkaline, that is your SGOT, SGPT or AST ALT, if they rise more than 2 times of the normal, so what is the normal in pregnancy? Normal in pregnancy is less than 40 international units is the normal value. So if it rises more than 80, if the value is more than 80, AST ALT value is more than 80, or liver enzymes rises to more than 80 or 2 times of normal, then you say patient is having severe features. Apart from that, what are the other severe features? If you do a peripheral blood film, then in the peripheral blood film you will find that there are Burr cells, schistocytes, helmet cells. These are actually a result of RBC breakdown. Okay, or the size and shape of the RBCs becomes changed. Okay, so you get Burr cells, schistocytes, helmet cells. Okay, these are suggestive of hemolysis. These cells, finding of these cells, as you have studied in pathology, are suggestive of hemolysis. So whenever there is hemolysis, these are the resultant findings. So it also says the patient has severe preeclampsia. Apart from that, patient can have pulmonary edema. Why pulmonary edema develops? Because there is fluid collection in all the compartments in the body. जब fluid collect हो जाता है सारे parts of the body में, तो lungs में भी fluid इकट्ठा हो जाता है because of right heart failure. There is pulmonary edema, and pulmonary edema will thereby lead to breathlessness. So patient can have shortness of breath because of pulmonary edema. Apart from that, patient will also have pedal edema. Pedal edema will also be found. So these are some of the signs of your severe preeclampsia. Apart from that, sometimes they will ask you what are the imminent signs of eclampsia. Imminent signs of eclampsia. Okay, या फिर imminent eclampsia. Imminent eclampsia means if these signs you find, then it means that patient को अभी किसी भी वक्त eclampsia हो सकता है. तो if BP is higher than 160 by 110 and it remains persistently high and you have not given any medications to control the high BP of 160 by 110, then patient will develop seizures हो जाएगा, which is also called as eclampsia.
आई विल नाउ बी टेलिंग यू द पैथोफिजियोलॉजी, क्यों सीजर्स होता है, ये सब में आपको क्वेरीज रहता है. सो आई विल टेल यू इन डिटेल्स. टिल नाउ रिमेंबर दैट अगर बीपी मोर देन 160/110 है देन यू गेट सीजर्स. एंड दीज सीजर्स आने से पहले पेशेंट को कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आता है. क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स आता है? विच आर इमिनेंट, मीन्स these are showing that patient can have seizures. One is headache. Okay, ऊपर से नीचे तक आते हैं. तो if you see this is the female who is having BP more than 160/110, क्या क्या उसको साइंस एंड सिम्टम्स आ सकते हैं? सबसे पहले तो हेडेक हो जाएगा पेशेंट को. ओके, सो हेडेक शुड नॉट बी टेकन लाइटली इन अ पेशेंट ऑफ हाई BP. नेक्स्ट कम्स द आईज. आईज में पेशेंट विल हैव ब्लरिंग ऑफ विजन. ओके, देर विल बी ब्लडिंग ऑफ विजन. तो पेशेंट का विजन और ब्लडिंग हो जाएगा एंड देर विल बी स्कोटोमा. ओके, सो स्कोटोमा या फिर ब्लैक कलरेशन इन फ्रंट ऑफ द आईज. ठीक है, दीज आर वेरी सीवियर फीचर्स एंड दीज आर साइंस ऑफ इमिनेंट एक्लेम्शिया. अपार्ट फ्रॉम दैट पेशेंट विल हैव एपीगैस्ट्रिक पेन. एपीगैस्ट्रिक पेन क्यों होता है? एपीगैस्ट्रिक पेन होता है लिवर में फ्लूइड एक्युमुलेशन के वजह से. तो एपीगैस्ट्रिक पेन इज ऑल्सो अ साइन ऑफ इमिनेंट एक्लेम्शिया. एंड लास्टली पीडल इडिमा. ओके, पीडल इडिमा, these are some of the signs which are very frightening and you have to be really worried of. इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकता है इन पेशेंट्स ऑफ पल्मोनरी इडिमा. ठीक है, पल्मोनरी इडिमा वाले पेशेंट्स को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है. दीज आर इमिनेंट साइंस ऑफ एक्लेम्शिया. मतलब अगर ये हो रहा है तो पेशेंट को जल्दी से मैग्नीशियम सल्फेट देना है, अदरवाइज पेशेंट विल गो टू हैव सीजर्स. ओके, नाउ once we have studied all these things, let us study some of the percentages which are important and which comes in NEET PG. Okay, percentages में हमेशा याद रखना, out of all the patients 10% of pregnancies end up in having hypertensive disorders of pregnancy. Okay, तो hypertension होता है 10% of the females जिनको प्रेगनेंसी है. ठीक है, उसमें से 10%, एक्चुअली द फिगर इज 8 to 10%. 8 to 10% ऑफ द फीमेल्स हैव हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी, ऑफ विच 3% हैव क्रोनिक हाइपरटेंशन. 3% हैव क्रोनिक हाइपरटेंशन मीन्स उनको शुरू से ही बीपी हाई था या फिर लेस देन 20 वीक्स में बीपी हाई हुआ था. ओके, now out of the patients who have chronic hypertension, उनका बीपी ऑलरेडी हाई था पहले से, 25% of patients develop superimposed preeclampsia. मतलब पहले से बीपी हाई था, अभी प्रेगनेंसी में 1/4 of them, that is 25% of them develop proteinuria later on in pregnancy. And out of the patients who have gestational hypertension, means जिनका बीपी more than 20 weeks में बढ़ा था लेकिन प्रोटीनोरिया नहीं था, उनमें से 50% of the patients develop preeclampsia, means उनको प्रोटीनोरिया हो जाता है. तो out of all the patients who develop hypertension at more than 20 weeks, 50%, half of them will develop preeclampsia. Okay, very important. Now see, if a patient has previous history of preeclampsia, previous pregnancy में पेशेंट को preeclampsia था, इस बार पेशेंट को कितना % चांस है कि preeclampsia दोबारा होगा? 30%. 30% चांस ऑफ repeat preeclampsia in next pregnancy. Very, very important. Okay, if patient is having previous history of gestational hypertension, पिछले प्रेगनेंसी में सिर्फ बीपी हाई हुआ था, प्रोटीनोरिया नहीं था, then this time she has 70% chance of repeat gestational hypertension. Okay, सिर्फ बीपी इस बार बढ़ने का रेट 70% है. तो कैसे याद करोगे? निमोनिक क्या है? 70 + 30 = 100. ओके, सो ऐसे याद रखो. प्रीएक्लेम्शिया का रेकरेंस रेट इज 30% एंड जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का रेकरेंस रेट इज 70%. ओके, बट इफ अ पेशेंट हैड प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्लेम्शिया, पिछली बार प्रेगनेंसी में इतना बीपी बढ़ा था कि पेशेंट को दौरे आ गए थे, एक्लेम्शिया हो गया था, then this time
having eclampsia in this pregnancy is 1.5% of having repeat eclampsia in this pregnancy. Eclampsia is itself is very rare. तो अगर पिछली बार हुआ था तो इस बार होने का रिस्क 1.5% है, लेकिन इन पेशेंट्स को प्री एक्लेम्शिया होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज़ 30% ऑफ हैविंग प्री एक्लेम्शिया, रिपीट प्री एक्लेम्शिया. मतलब इस बार भी बीपी हाई होने का एंड प्रोटीनूरिया होने का रिस्क 30% है, आउट ऑफ विच 1.5% रिस्क है कि इस बार इसको एक्लेम्शिया हो जाएगा. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. One more question which comes very important comes in examination is family history. अगर किसी के मदर को हाइपरटेंशन था प्रेगनेंसी में, ओके, मदर को प्री एक्लेम्शिया था या हाइपरटेंशन था इन प्रेगनेंसी, अब ये डॉटर पूछ रही है कि दिस टाइम मतलब उनका कितना % चांस है प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होने का, तो इट इज़ 20 to 40%. ठीक है. अदर एल्डर सिस्टर या कोई और सिस्टर, मतलब यंगर सिस्टर मान लो, सिस्टर इज़ हैविंग हाइपरटेंशन, देन द इंसिडेंस ऑफ हैविंग हाइपरटेंशन इन द मदर इज़ 10 to 30%, थोड़ा सा कम है. ठीक है. तो मदर से ज़्यादा इनहेरिट करता है rather than सिस्टर का. बट इफ़ इट इज़ अ ट्विन सिस्टर was having hypertension in pregnancy, so the other twin will have more chance of having hypertension, and it is almost half, that is 50% of them will have hypertension. Okay, very important. इसके अलावा अदर रिस्क फैक्टर्स क्या है हाइपरटेंशन के? वन इज ब्लैक women. So Negroes will have more chances of hypertension in pregnancy. Other than that, lower socioeconomic status, then primigravida. Okay, primigravida में hypertension ज़्यादा होता है. क्यों होता है? I will tell you now. Pathophysiology जब बोलेंगे. And very obese women who have BMI more than 30 kg per meter square, they have more chance of having hypertension in pregnancy. Okay, so these are the risk factors. So always remember, when patient has high risk factors, these high risk factors like patient को previous history of preeclampsia था, previous history of eclampsia था, या hypertension in the family है, या फिर she is a black woman, low socioeconomic status, primigravida, BMI more than 30 और age more than 35 years. ठीक है, when she is becoming pregnant, और फिर ट्विन प्रेगनेंसी है. ठीक है, दीज आर द हाई रिस्क फैक्टर्स. ओके, और पेशेंट इज हैविंग टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस फॉर अ लॉन्ग टाइम, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, और शी इज़ अ केस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़. ओके, she has autoimmune disorders. Okay, these are the high risk factors. So in all these high risk factors, we generally prescribe tablet aspirin. Okay, aspirin is given to all these patients during pregnancy. Aspirin को market name is ecospirin. Okay, so ecospirin tablet दिया जाता है pregnancy में 150 mg at night time, that is HS, Horaceamine. Okay, at bedtime you always prescribe them aspirin. Now this aspirin is very much essential for prevention of preeclampsia. Very 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 important. And every time you get a question, what are the high risk women, what are the high risk factors where you prescribe aspirin during pregnancy? Okay, now always remember, when you prescribe aspirin or ecospirin to patients for the prevention of preeclampsia, always start them at less than 12 weeks of pregnancy. मतलब इनिशियल 4th मंथ स्टार्ट होने से पहले ही हमें एस्पिरिन का टैबलेट स्टार्ट करना है. एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी शी विल बी टेकिंग 150 mg ODHS at bed time. She will take ecospirin. Why at bed time? This is because after taking ecospirin, many of the patients have dizziness. So if she is having dizziness all over the day, then she will not like it and she will stop the drug. But रात में लेने से वो लेके सो जाएगी, उसको dizziness नहीं feel होगा and she will not have any discomfort. So that is why ecospirin is started at less than 12 weeks. And if she misses at 12 weeks, then preferably by less than 16 weeks you have to start ecospirin. This is because at 16 weeks the placental the trophoblastic invasion
to the spiral arterioles are occurring. So अगर 16 weeks के बाद आप इकोस्प्रिन स्टार्ट कर रहे हो तो कोई एक्शन नहीं आएगा एंड पेशेंट को हाइपरटेंशन हो ही जाएगा. ठीक है. So very important, in which patients you have to start ecosprin and when do you have to start. Start it at less than 12 weeks, preferably less than 16 weeks में start करना है and continue it till delivery. Till delivery she has to take 150 mg every day at night time. Now after we have studied all these things, ठीक है, we come to the pathophysiology of preeclampsia. Very important, pathophysiology of preeclampsia. Okay, so understand properly. हमेशा understand करके पढ़ो so that you remember. Never try to mug up anything. Basically pathophysiology क्या है? Always remember these few terminologies every examiner wants to hear from you in Viva. One is, it is a multifactorial polygenic disorder. Multifactorial polygenic disorder. It means कि it is having multiple factors. There are multiple factors we will be discussing. Many of the genes are involved in preeclampsia. So एक pinpoint we cannot tell कि एक gene is involved in preeclampsia. It is a polygenic disorder. Number one. Number two, there is multi-organ involvement. Multi-organ involvement. Okay. So as we go through the organ system, you will find that how every organ is being involved. And mind you, मैं इतने अच्छे से I'll try to explain to you. Just listen to me properly and you will find this pathophysiology of preeclampsia very interesting. You will have interest in reading the chapter. Number two, it is a two-stage disorder. It is a two-stage disorder. What do you mean by two-stage disorder? अभी बताते हैं. Basically what happens during pregnancy, this is the placenta. Suppose this is the placenta, this is the umbilical cord and this is the baby. Okay, this is the baby. So what happens, trophoblastic cells है placenta के अंदर, trophoblastic cells. Now what happens, this is the uterus. Suppose this is the uterus. Now uterine artery आता है and uterine artery keeps dividing into spiral arterioles and these spiral arterioles will come and supply the placenta. Placenta के अंदर इनके supply आ रहा है spiral arterioles का. ठीक है. Now what happens, these trophoblastic cells, trophoblastic tissues start migrating into the spiral arterioles. ये जो mother के blood vessels है इसके अंदर घुसने लग जाते हैं. So once they keep invading the spiral arterioles, तो वो क्या करते हैं, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स आके स्पाइरल आर्टेरियोल्स का जो मस्कुलेचर रहता है, जो ट्यूनिका मीडिया होता है, मस्कुलर लेयर, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है. वंस इट डिस्ट्रॉयज दीज मसल्स, दीज ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स ऑफ द प्लेसेंटा और द फीटस डिस्ट्रॉयज द मसल्स. सो व्हाट हैपन्स, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर होता है ब्लड वेसल्स का, यूट्राइन आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स का, वो डैमेज हो जाता है एंड ब्लड वेसल्स नेवर कॉन्ट्रैक्ट. When blood vessels do not contract, blood vessels keeps dilating and blood vessels बड़े हो जाते हैं क्योंकि the tunica media or the musculature of the blood vessels have been destroyed. So once they are destroyed, they become dilated. Once they are dilated, they can accommodate more amount of blood. And we all know pregnancy में there is hemodilution. हीमोडाइल्यूशन के चलते क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज. ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था. तो अगर एक पाइप है उसमें से 1 लीटर पानी जा रहा है और अगर वो हीमोडाइल्यूशन होके अब मान लो 2 लीटर पानी जा रहा है, तो 2 लीटर पानी अगर उस पाइप में डाल देंगे तो इट इज़ बट ऑब्वियस दैट प्रेशर विल इंक्रीज. 1 लीटर की जगह 2 लीटर डाल दिया तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. बट अगर मैं उस पाइप का डायमीटर इंक्रीज कर दूं तब वो 2 लीटर पानी को भी एकोमोडेट कर देगा एंड द प्रेशर विल नॉट इंक्रीज. So this is body's mechanism that when there is hemodilution and the blood volume has increased, so body has migrated these trophoblastic cells into the spiral arterioles so that these spiral arterioles get dilated and then uterine artery gets dilated and rest of the vasculature so that more and more of fluid can be accumulated in these vessels so that blood pressure does not increase. So this is normal mechanism of the body कि trophoblastic invasion होता है and blood pressure increase नहीं होता है.
But because of some reason, if this trophoblastic invasion do not take place properly, then the blood vessels will not increase in diameter. blood vessel का जितना diameter था उतना ही रहेगा, and hemodilution के चलते blood volume भी बढ़ जाएगा, and then blood pressure will increase. So समझ में आ गया what is the pathophysiology? Pathophysiology is defective trophoblastic invasion. रिमेंबर जो ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन हो रहा था वो नहीं होगा, एंड दिस इज डिफेक्टिव ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन into the spiral arterioles, because of which the spiral arteriolar diameter will not increase, and since there is hemodilution blood pressure will increase क्योंकि blood volume बढ़ रहा है and diameter of the vessels बढ़ा नहीं है. Very 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 important. This is the first mechanism. The second theory which is said is number 2 is immunological maladaptive tolerance. Immunological maladaptive tolerance. Okay, so try to study like this so that you never forget. Even in exam आज के इस class के बाद I will think that nobody will ever forget once you have studied like this. So the second mechanism is immunological maladaptive tolerance. Now what actually happens, this is the uterus and it has the baby within it. Okay, so baby has both mother का characteristic as well as father का genes. ठीक है, genes from both mother and father are there. Now maternal genes are own genes for the mother, तो इसके against there will not be any immunity. But father के जो genes आए हैं, these are foreign antigens to the mother. These are foreign antigens. So it is just like a graft. Baby is just like a graft. तो graft versus host reaction होता है. तो body में क्या होगा, if there is immunological maladaptive tolerance, मतलब tolerance सही से नहीं हो पाता है, then there will be inflammation in the body, because mother का body is sense the fetus as a foreign antigen. Inflammation होगा तो there will be neutrophilic infiltrate, and then because of inflammation the blood vessels will get swollen and blood vessels will become narrow. So once the blood vessels are narrowed down, क्या होगा, the blood pressure increases. So this theory says that because fetus is a external product, so it is a foreign antigen, and against this foreign antigen inflammation occurs in the mother's body, and because of this inflammation there is neutrophilic infiltrate and the blood vessels decrease, and so the diameter decreases and blood pressure increases. So this theory explains why primigravida have more of hypertension, because first time father के antigen से exposure हुआ है तो इसलिए BP बढ़ गया है. जैसे जैसे नेक्स्ट प्रेगनेंसीज होते जाएंगे तो सेम उसी फादर का ही जेनेटिक मटेरियल बार बार आ रहा है, तो बॉडी धीरे धीरे एडेप्टिव हो जाएगा. दैट इज़ वाई यू नो T helper cells, T helper 1 cells is very immunogenic, but they decrease in pregnancy, whereas T helper 2 cells increase in pregnancy. T helper 2 cells are less immunogenic, तो वो क्या करेगा, graft versus host reaction नहीं होने देगा. But because of some reason, if the T helper 2 cells are not increased that much, and T helper 1 cells are high in pregnancy, then patient will have immunological maladaptive tolerance, and then patient will develop preeclampsia. ठीक है. इसके अलावा there is another mechanism which is called the anti-angiogenic theory. Okay, third mechanism is anti-angiogenic. It is estimated that our body has a dynamic equilibrium of anti-angiogenic versus pro-angiogenic factors in the body. एंटी फैक्टर्स क्या कराता है, जो ब्लड वेसल्स का जो प्रोलिफरेशन है उसको रोक देता है, whereas pro-angiogenic factors help in all the development of all the this thing new blood vessels in the body, that is neovascularization occurs. So what happens, since blood volume is increasing in pregnancy, if new blood vessels are formed, then the
volume of blood will be accommodated and so blood pressure will remain low. बट अगर न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म नहीं होंगे तो ये जो इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ ब्लड है उसको एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे एंड सो ब्लड प्रेशर will increase in pregnancy. Okay, blood pressure will increase. Sorry for the technical glitch. Blood pressure will increase in pregnancy. Okay, so once these blood pressure increases, so when will the blood pressure increase? When there is all the anti-angiogenic factors, if they keep on increasing, if the anti-angiogenic factors keep on increasing and your pro-angiogenic factor keeps on decreasing, then what happens? New blood vessels won't be formed and so preeclampsia will occur. Okay, what are the anti-angiogenic factors? Very very important. What are the anti-angiogenic factors? Anti-angiogenic factors examples exam में आता है, very important for questions MCQs. You have SFLT. SFLT is soluble FMS like tyrosine kinase, soluble FMS like tyrosine kinase, SFLT, and soluble endoglyne, soluble endoglyne. Okay, these are the anti-angiogenic factors which increase in preeclampsia, whereas the pro-angiogenic factors which decrease in preeclampsia are nitric oxide, then you have PLGF, that is placental growth factors, all the growth factors, ठीक है, epidermal growth factors EGF, then TGF, transforming growth factors. Okay, so these are the growth factors which decrease in pregnancy. Okay, and those anti-angiogenic factors, they increase in pregnancy. Okay, so these are the mechanisms by which you have preeclampsia in pregnancy. Now once the BP increases, how organs, why patient develops eclampsia? एक्लेम्शिया क्यों होता है? बीपी तो बढ़ गया बिकॉज ऑफ दीज मैकेनिज्म्स. नाउ वाई एक्लेम्शिया? सीजर्स क्यों आता है? वाई स्पेसिफिकली हाई बीपी रहता है, सीवियर प्री एक्लेम्शिया रहता है मोर देन 160/110, देन वाई एक्लेम्शिया ऑकर्स? सो फर्स्ट कम टू द ब्रेन. व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन द ब्रेन? ओके, सो suppose this is the brain. Okay, this is the brain tissue. Now what happens when there is preeclampsia? Preeclampsia में मैंने क्या बोला है कि the proteinuria increases. So what happens? This is the kidney. Okay, so kidney में if you just highlight the glomerulus, what happens? You have glomeruli. Okay, these are the glomeruli, and then you have the Bowman's capsule. Okay, and after that you have the tubules. Okay, so what happens? There is glomerular endotheliosis. Glomerular, very important, comes in exam. Glomerular endotheliosis. Glomerular endotheliosis means the pores of the glomeruli increases in size. The pores increase. Okay, so once the glomerular endotheliosis occurs and the podocytes get swollen, podocytes are the cells over here, they get swollen. Okay, means they are not able to filter the products, then all the proteins start getting secreted into the Bowman's capsule and the PCT. Okay, and these all the proteins start getting excreted. Okay, all the proteins start getting excreted. So when the proteins start getting excreted, patient will have hypoproteinemia. Patient will develop hypoproteinemia in the body. ब्लड में हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाएगा. ठीक है, so once there is hypoproteinemia in the body, then what happens? Urine excretion decreases. Urine excretion decreases because hypoproteinemia में all the this fluid accumulation हो जाएगा, means fluid excretion decreases, so the blood volume increases, more and more blood volume increases. So once blood volume increases, सारे बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, तो एनासार्का हो जाएगा. देयर इज एनासार्का, और इट मीन्स देयर इज फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द बॉडी. सो पेशेंट विल हैव पल्मोनरी इडिमा. ठीक है, पल्मोनरी इडिमा हो जाएगा. दिस मीन्स द लंग्स विल गेट फिल्ड विद ब्लड. ओके, सॉरी, वाटर. देयर विल बी फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द लंग्स. सो पेशेंट विल हैव क्रेप्ट्स. ओके, क्रेप्ट्स हो जाएगा, बेसल क्रेपिटेशंस, एंड देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. पेशेंट विल हैव this thing, orthopnea.
ऑर्थोपनिया, PND, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, ऑल दिस थिंग्स हार्ट डिजीज वाले साइंस हो जाएंगे. पेशेंट विल ऑल्सो हैव राइट हार्ट फेलियर, एंड राइट हार्ट फेलियर के चलते पेशेंट को पीडियल इडिमा भी हो जाएगा. पूरे बॉडी में देर इज फ्लूइड एक्यूमुलेशन. Similarly, fluid accumulation occurs in the brain also. There will be accumulation of fluid in the brain also. Now remember, when patient is having very high BP, that is BP more than 160 by 110, okay, those patients उस समय क्या होगा, उनका पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होगा, चक्कर आएगा, तो पेशेंट क्या करेंगे, लेट जाएंगे. पेशेंट्स विल बी मोस्टली सुपाइन एट दैट टाइम. They won't be keeping walking because they will feel uneasy. They will sleep. Okay, they will keep on lying down. When they lie down, then the most dependent portion of the brain is the occipital lobe. Occipital lobe becomes the most dependent portion of the brain. So what happens? There is fluid accumulation in the occipital lobe of the brain. फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है इन द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द ब्रेन. सो ऑक्सीपिटल इडिमा, ब्रेन में ऑक्सीपिटल इडिमा इज वेरी कॉमन. ओके, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द ब्रेन is in the occipital lobe. So occipital edema will occur in the patients. And always remember the eyesight or the this thing, योर आइज के जितने सेंसेशंस है, ठीक है, ऑल द साइट एंड विजन इज गवर्न बाय द ऑक्सीपिटल लोब. सो विजन इज गवर्न बाय द ऑक्सीपिटल लोब. सो वंस देर इज इडिमा इन द ऑक्सीपिटल लोब, देन विजन गोज. ओके, विजन गोज बिकॉज द लैटरल जेनिकुलेट गैंग्लिया से जो आपका ऑक्सीपिटल लोब में जा रहा है उसमें कंप्रेशन पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीपिटल इडिमा. दैट इज वाई पेशेंट वॉज हैविंग ब्लरिंग ऑफ विजन प्रायर टू एक्लेम्शिया. ठीक है, तो वाई पेशेंट वॉज हैविंग हेडेक वॉज ऑकरिंग बिकॉज पेशेंट वॉज हैविंग रेज्ड आईसीटी. इंट्राक्रेनियल टेंशन रेज हो गया था, इसलिए पेशेंट को हेडेक हो गया था. देन पेशेंट वॉज हैविंग ब्लरिंग ऑफ विजन BV बिकॉज ऑफ compression in the occipital lobe. So this is why patient was having such type of symptoms. Okay, so basically out of all the patients, remember 10 to 15% of patients, 10 to 15% of patients of severe preeclampsia, those who are having severe preeclampsia, that is BP more than 160 by 110, out of them 10 to 15% will develop blurring of vision. Okay, and 25% of the patients of severe preeclampsia will develop headache. Okay, they will develop headache. And these are imminent features कि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया ब्लड प्रेशर, देन पेशेंट को सीजर्स आ जाएगा. ठीक है, नाउ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आई विल बी टेलिंग वेरी माइन्यूटली, ट्राई टू लिसन. व्हेन पेशेंट इज हैविंग ब्लरिंग ऑफ विजन, when patient is having blurring of vision, ठीक है, this is because of patient is having occipital edema, and this blurring of vision is completely reversible. This is completely reversible, and this is termed amaurosis fugax. Amaurosis fugax. You must have studied in your ophthalmology classes. सो ट्राई टू रिमेंबर इट बिकॉज ये एग्जाम्स में आता है, MCQs में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू कैन नॉट फॉरगेट द सब्जेक्ट्स विच यू हैव स्टडीड अर्लियर. सो फाइनल ईयर में भी कोरिलेट करके हमेशा पढ़ना है. तो एमाउरोसिस फ्यूगैक्स इज रिवर्सिबल ब्लरिंग ऑफ विजन या ब्लाइंडनेस विच ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर. ओके, विच स्ट्रक्चर गेट्स कंप्रेस्ड? इट इज योर lateral geniculate ganglia. Lateral geniculate ganglia which gets compressed because of occipital edema. And number 3, sometimes you have retinopathy also because of high blood pressure. Retinopathy means retinal detachment. Retina ठीक है टूट गया सामने से. There is blood accumulation because of high blood pressure. This retinopathy because of hypertension of pregnancy is called Peutsch's retinopathy. Peutsch's retinopathy. Okay, Peutsch's retinopathy, very very important. You must have studied in your ophthalmology classes. Do not ever forget this. ठीक है, patient will have Peutsch's retinopathy or retinal detachment. Okay, now at this same time I would also like you to revise what are the stages of hypertensive retinopathy. Okay, hypertensive retinopathy.
You must have studied just a revision of the classes because these are also things which you correlate and exam में आजकल क्या होता है एक सब्जेक्ट से प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आता है, वो हर अलग अलग सब्जेक्ट को मिला के एक क्वेश्चन बनेगा. सो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हैज़ 4 stages, stage 1, 2, 3 and 4. What actually happens in stage 1? In stage 1, basically patient will have diffuse narrowing of the blood vessels, of all the retinal vessels. There will be diffuse narrowing, as a result of which diffuse narrowing की वजह से ये narrow हो जाएगा blood vessels. तो there will be broadening of the light reflex. मतलब हम क्या करते हैं, जनरली हम लाइट डालते हैं एंड लाइट डाल के देखते हैं कि डिफ्लेक्शन कितना है लाइट का इन द रेटिना. ओके, so broadening of the light reflex occurs. Secondly, what happens in the second stage, when you look at the fundus, there will be focal narrowing of the blood vessels. So blood vessels will become narrowed. Okay, there will be focal narrowing. Initially क्या हुआ था, there was diffuse narrowing. अब क्या होगा, there will be focal narrowing of the blood vessels. Focal. Okay, so focal narrowing of blood vessels is stage 2. Okay, this will lead to deflection of light reflex, okay, which is also called nipping of the light reflex. Okay, this occurs in stage 2. stage 3 में क्या होता है, stage 3 में you have copper wiring, okay, या फिर soft exudates, okay, and stage 4 में you have silver wiring pattern, or which is also called hard exudates या फिर optic disc edema. Okay, so these are the things in stage 4. Now why I was telling all these things, remember there has been questions in exam. अगर पेशेंट को स्टेज 3 या स्टेज 4 हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होता है, देन यू कैन नॉट गिव लंबा ट्रायल ऑफ लेबर नहीं दे सकते, क्योंकि ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जब पेशेंट को वाल्सल्वा होगा, वाल्सल्वा मैन्यूवर करेगी, पेशेंट पुश करेगी ड्यूरिंग डिलीवरी, देन व्हाट हैपन्स, पेशेंट का रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगा एंड पेशेंट विल स्टार्ट ब्लीडिंग इनसाइड द आईज. That is a very very dreaded complication. So always remember, अगर लाइट रिफ्लेक्स में कॉपर वायरिंग, सिल्वर वायरिंग होता है, सॉफ्ट एक्सुडेट्स, हार्ड एक्सुडेट या ऑप्टिक डिस्क इडिमा होता है, then you have to cut short second stage of labor. So how do you cut short second stage of labor? Either you use prophylactic forceps delivery. प्रोफाइलैक्टिक फॉर्सेप्स अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्सेप्स टू कट शॉर्ट सेकेंड स्टेज सो दैट पेशेंट डज नॉट गो इनटू वाल्सल्वा, या फिर यू हैव टू डू एन इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन टू प्रिवेंट रेटिनल डिटैचमेंट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस कम. आई एम पुटिंग 2-3 स्टार्स इन इट. ठीक है, वाइवा में भी पूछते हैं. पेशेंट इज हैविंग सीवियर दिस थिंग, ब्लड प्रेशर, सीवियर प्री एक्लेम्शिया, and then patient's BP has risen, and then patient का जब आपने fundus examination कराया तो you have retinopathy या फिर stage 3 and stage 4 hypertensive retinopathy. What will be your mode of delivery? It will be either elective cesarean section or you have to cut short second stage of labor. Very important. Okay, so this is what happens, okay, in the eye, blurring of vision and ये सब हो गया. Even if you do not stop at this stage, what will happen if you do not stop at this stage? Then patient का क्या होगा, edema बहुत बढ़ जाएगा, edema बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, and then patient will develop press. What is press? PRES. Next important question which comes in exam. What is press? Press is posterior reverse encephalopathy syndrome. Posterior reverse encephalopathy syndrome means now patient will start having all the talk, all irrelevant, patient encephalopathy में चली जाएगी and patient को
पोस्टीरियर, क्योंकि ये ऑक्सीपिटल लोब में हो रहा है, इट इज़ रिवर्सिबल एट दिस स्टेज ऑल्सो, इट इज़ रिवर्सिबल एंड एनकेफेलोपैथी हो जाएगा. सो हाउ डू यू डायग्नोज प्रेस? Press can be diagnosed by doing an MRI of the brain or CT scan of the brain. MRI या CT scan of the brain. So all patients of severe preeclampsia या फिर eclampsia, try to get an MRI or CT scan done so that you can diagnose press. Okay. So in CT scan you have hypodense areas. Hypodense areas, very very important, because this क्वेश्चन कम्स अंडर रेडियोलॉजी सेक्शन. रेडियोलॉजी आप लोगों का क्लासेस अगर होता होगा देन यू माइट बी नोइंग इन प्रेस और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में सीटी स्कैन शोज हाइपोडेंस एरियाज. मतलब हाइपोडेंस मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वो वाइट कलर का दिखता है. हाइपोडेंस मतलब लेस डेंस है, मतलब ब्लैक कलर का दिखेगा इन सीटी स्कैन. रेस्ट ऑफ द ब्रेन विल लुक वाइट एंड आपका ये ऑक्सीपिटल लोब विल लुक ब्लैक. ओके, हाइपोडेंस एरिया. सिमिलरली अगर आप MRI कराओगे, MRI में इट विल लुक हाइपर इंटेंस. हाइपर इंटेंस याद रखना, इसमें हाइपर होता है उसमें हाइपो होता है. ओके, तो हाइपर इंटेंस रीजन एरिया इन T2 weighted image. T2 weighted image, very very important. At the same time I would also like to tell once again, रेडियोलॉजी इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट. ओके, शॉर्ट सब्जेक्ट्स में आता है रेडियोलॉजी. सो इफ़ यू हैव रेड रेडियोलॉजी देन आपको पता होगा. इफ़ यू हैव नॉट रेड, आई विल टेल यू वंस मोर. MRI के दो फिल्म्स होते हैं. वेन एवर यू सी समबडी डूइंग MRI का T1 वेटेड इमेज होता है, T2 वेटेड इमेज होता है. ठीक है, एक में वाटर ब्लैक कलर का दिखता है, एक में वाटर वाइट कलर का दिखता है. ठीक है, सो इन T2 वेटेड इमेज जो कराते हैं उसके अंदर जो प्रेस वाला रीजन है दैट विल बी हाइपर इंटेंस. हाइपर इंटेंस हाइपर हो जाएगा तो मैंने बोला है हमेशा वाइट कलर का दिखेगा. तो इट लुक्स वाइट कलर इन द MRI T2 वेटेड इमेज. T1 वेटेड इमेज में वो अच्छे से पता नहीं चलता है. अगर इस स्टेज पे भी आपने BP को कंट्रोल नहीं किया देन वो इतना ज़्यादा आपका इडिमा हो जाएगा कि टेंटोरियल हर्निएशन हो जाएगा. दैट इज़ फ्रॉम द, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि देर विल बी प्रोट्रूशन ऑफ द ब्रेन थ्रू द क्रेनियम. ओके, टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड वाले रीजन में, तो देर विल बी टेंटोरियल हर्निएशन. एंड व्हेन देर इज टेंटोरियल हर्निएशन देन व्हाट हैपन्स, आपका कौन सा पार्ट हर्निएशन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है. इट इज़ योर ये लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सो लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन मीन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा का हर्निएशन हो रहा है. एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटेन्स ऑल द वाइटल एरियाज ऑफ द ब्रेन. वाइटल एरियाज मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर, ब्रीदिंग सेंटर, heart rate governing, everything is done by this medulla oblongata. So medulla oblongata will get herniated and there will be damage to the medulla oblongata and this is the cause of death of the patient. Okay, तो अगर आपने BP कंट्रोल नहीं किया then hypertensive patients will finally die and the cause of death will be either tentorial herniation or if the patient is having repeated जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, तो पेशेंट को मल्टीपल जगह पे इंजुरी हो सकता है. पेशेंट को एस्पिरेशन हो सकता है बिकॉज पेशेंट हैज़ गॉन इनटू पल्मोनरी इडिमा, और पेशेंट्स किडनी माइट डैमेज एंड शी मे लैंड अप इन एक्यूट किडनी इंजुरी एंड क्रोनिक किडनी डिजीज एंड देयर बाय लीडिंग टू डायलिसिस. सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ डेथ इन द पेशेंट्स. नाउ एक्लेम्शिया क्यों होता है, ये तो अभी तक हमने जाना नहीं. एक्लेम्शिया क्यों होता है? Basically when there is raised ICT and the brain has all the edema, उस समय क्या होता है, all the blood vessels, all the neurons get activated. न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाता है. न्यूरॉन्स क्यों एक्टिवेट होता है? बिकॉज देर इज़ अ रिसेप्टर कॉल्ड NMDA रिसेप्टर्स. ठीक है, NMDA, इट इज़ अ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. ओके, so this neurotransmitter NMDA excitatory neurotransmitter gets stimulated and so all the nerves will get stimulated at the same time. There will be excitation of all the nerve impulses and so patient will start having seizures. Okay,
and this seizures is specifically GTCS, that is generalized tonic-clonic seizures, okay, and which is also called eclampsia. Now with this we end the pathophysiology of preeclampsia, okay. So always remember जो ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन आपका हुआ था मीन्स प्लेसेंटा से स्पाइरल आर्टेरियोल्स के अंदर घुसा था, दैट ऑकर्स इन 2 waves, मतलब 2 times पे होता है, ठीक है. द फर्स्ट वेव ऑकर्स इन 12 to 14 weeks of pregnancy, and the second wave of trophoblastic invasion occurs at 16 to 18 weeks of pregnancy. So if the trophoblastic invasions are defective, then patient will develop preeclampsia. तो हमें क्या करना है, जो इकोस्प्रिन या एस्पिरिन हम स्टार्ट कर रहे थे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्रीएक्लेम्शिया, सो इकोस्प्रिन हेल्प्स इन डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड सो बेटर ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन. सो यू हैव टू स्टार्ट इकोस्प्रिन या एस्पिरिन एट लेस देन 12 weeks. सो लेस देन 12 weeks में करेंगे तो फर्स्ट इन्वेजन भी होगा, सेकेंड इन्वेजन भी होगा. बट अगर सेकेंड इन्वेजन भी हो गया 16 weeks एंड उसके बाद आप स्टार्ट कर रहे हो इकोस्प्रिन, देन इसका कोई रोल नहीं है एंड पेशेंट का ऑलरेडी हाइपरटेंशन हो जाएगा क्योंकि डिफेक्टिव ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, ओके. So once you have studied all these things and now you all are expert in hypertension in pregnancy, so now let us see what is the management of patient with preeclampsia या hypertension in pregnancy. सो मैनेजमेंट में मैंने हमेशा बताया पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करना है. हिस्ट्री में पेशेंट विल हैव हाई बीपी रिकॉर्ड्स. इफ द बीपी इज मोर देन 140/90 in 2 readings 4 hours apart, then you say patient is having hypertension. Along with that, if there is proteinuria, then patient will have preeclampsia. If the BP is more than 160/110, 2 readings 10 to 15 minutes apart, then you say it is severe preeclampsia. And if there is generalized tonic-clonic seizures along with it, you say patient is having eclampsia also. So these are the history which patient will give. Apart from that, patient can give history of headache, blurring of vision, epigastric pain, pedal edema. Epigastric pain occurs because there is hepatic edema. Liver में भी there is पानी का accumulation, and so liver का जो capsule है Glissen's capsule gets stretched, and so patient will have epigastric pain. So this is history. Coming to examination में you have to take blood pressure of patients. Always remember, take blood pressure in sitting position is ideal, and take at the level of the heart. Your BP cuff should be level at the level of the heart, and appropriate cuff should be placed. ऐसा नहीं कि pediatric cuff दे दिया या बच्चों में बड़ों का cuff दे दिया, ऐसे करना, ठीक है. And 2 readings has to be taken. Patient should be resting when you take the blood pressure, okay. This you have to do, and also you have to check for epigastric tenderness, blurring of vision, pedal edema, ये सब देख लिया. उसके बाद कमिंग टू इन्वेस्टिगेशंस में क्या कराएंगे. इन्वेस्टिगेशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल गेट बेडसाइड डिपस्टिक टेस्ट, टू सी इफ पेशेंट इज हैविंग प्रोटीनूरिया. अगर प्रोटीनूरिया है देन पेशेंट विल बिकम प्रीएक्लेम्शिया, अदरवाइज पेशेंट विल बी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. However, if the patient is having BP more than 160/110, then irrespective of proteinuria, अगर आप हो या ना हो, patient will be severe preeclampsia. तब आप gestational hypertension नहीं बोलेंगे if BP is more than 160/110. Apart from that, you get CBC done. In CBC, you check whether patient is anemic, hemoglobin देखना है, and then you check platelets. If platelet count is less than 1 lakh, then I told patient is a case of severe preeclampsia. Apart from that, what you check is you do a renal function test. Renal function test में you check for serum creatinine. If the serum creatinine is more than 1.1, then she is a patient of severe preeclampsia. Coming to LFTs, get LFT done. If your SGOT, SGPT या फिर AST, ALT जैसा भी बोलो, okay, all the transaminases, if they are more than 2 times raised या फिर more than 80, then you say patient is having severe preeclampsia. Apart from that, you always get a peripheral blood film done to look for helmet cells, schistocytes and Burr cells. These will show patient is having hemolysis or not. If she is having hemolysis, then she is a case of severe preeclampsia, okay. Apart from that, you also get other tests done
like fundus examination of the patient. Fundus examination to look for hypertensive retinopathy. What are the stages of hypertensive retinopathy? Because accordingly we have to plan whether we will do an elective cesarean section or cut short second stage of labor. Apart from that, you get serum LDH done. If serum LDH or lactate dehydrogenase is more than 600 international units, then it is suggestive of severe preeclampsia because it is suggestive of hemolysis. Hemolysis में आपका RBC hemolysis से LDH बढ़ता है. Now severe preeclampsia also has a syndrome which is called HELLP syndrome. HELLP, HELLP syndrome. Okay, now what is this HELLP syndrome? H stands for hemolysis. So there is hemolysis which is occurring in the blood. So because of the hemolysis, what happens? Patient will डेवलप hemolysis. So hemolysis कैसे पता चलेगा? एक तो आपका LDH will be raised more than 600, LDH more than 600. दूसरा है आपका peripheral blood film will be showing all the schistocytes and Burr cells. Okay, these all things are suggestive of hemolysis. EL stands for elevated liver enzymes. Elevated liver enzymes are more than 80 or more than 2 times of normal. And low platelet means LP stands for low platelet is less than 1 lakh. Okay, so HELP is also a subset of severe preeclampsia. Severe preeclampsia. Now, sorry for the technical glitch which is occurring. So once you have diagnosed, you have done the investigations and everything, then the next thing comes, how will you treat? So for treatment, when patient comes to you and patient is having सपोज अब ट्रीटमेंट के लिए आता है कि पेशेंट को प्री एक्लेम्शिया है कि सीवियर प्री एक्लेम्शिया है. इफ इट इज ओनली प्री एक्लेम्शिया देन वी विल स्टार्ट ओरल एंटी hypertensives. Oral antihypertensives. So oral antihypertensives में you have 4 types of drugs. One is tablet labetalol. Tablet labetalol is the most important drug or most commonly used drug nowadays. The lowest dose is 100 mg BD 2 times daily. You can increase up to 300 mg QID. Okay, 4 times daily. You can increase up to that. So the maximum dose which we can go is up to 2.2 grams per day. 2.2 grams per day is the maximum dose up to which you can go. But in clinical practice, we generally go up to 300 into 4, that is 4 times a day. So 1.2 grams is the maximum dose which we go. Beyond that, we do not go. Tablet labetalol is alpha plus beta blocker. It is alpha plus beta blocker. And the mechanism of action is it blocks both alpha and beta. The side effects. What are the side effects of labetalol? Very, very important. What are the contraindications? Number 1. What are the contraindications of labetalol? Very, very important. Remember, one is bronchial asthma. Patients of bronchial asthma should not be given labetalol. And number 2 is your congestive heart failure. Heart disease patient should not be given labetalol. Otherwise, it is a very safe drug. The second drug which can be given is tablet nifedipine. Okay, nifedipine. Nifedipine is a calcium channel blocker. Nifedipine is a calcium channel blocker. So it will lead to vasodilation and then decrease in blood pressure. Its dose can be 10 mg. Okay, 5 to 10 mg can be given TDS. Okay, and it can be increased to around 120 mg तक जा सकते हैं. ठीक है. Then coming to this third drug. Third drug is your hydralazine. Hydralazine. Hydralazine is a vasodilator, peripheral vasodilator, and it is always given IV. Okay, intravenous hydralazine is given if there is severe preeclampsia. आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है. Okay, so these are few of the drugs which are given. Mostly we use labetalol and nifedipine. But if patient is having severe preeclampsia, that is BP is more than 160 by 110, तो ऐसे में आपको टैबलेट दे के कंट्रोल नहीं कर पाओगे. देन यू हैव टू स्विच ओवर टू IV labetalol, intravenous labetalol. So intravenous labetalol, what is the dosing regimen that we give? First you give 20 mg IV stat. Okay,
फिर उसके बाद 10 to 15 मिनट्स बाद यू मेजर द ब्लड प्रेशर. इफ द ब्लड प्रेशर इज मोर देन 160/110, दोबारा से 110 160 110 से ऊपर है, देन यू गिव 40 mg ऑफ IV लेबेटोलॉल. 40 mg दे दिया. उसके बाद अगेन आफ्टर 10 to 15 मिनट्स यू रिपीट द ब्लड प्रेशर. ओके, यू रिपीट द ब्लड प्रेशर. इफ BP is again more than 160/110, then you give again 80 mg. ओके, उसके बाद दोबारा 10 to 15 मिनट्स बाद करो, फिर से BP मोर देन 160/110, देन यू अगेन गिव 80 mg. सो दिस इज द रेजिमेन विच इज फॉलोड. 20, 40, 80, 80 and BP is checked every 10 to 15 minutes. if BP is more than 160/110 तभी देना है. अगर वो 160/110 से नीचे आ जाता है, then you switch over to oral labetalol. oral labetalol में आ जाना है. ठीक है. So this is how we treat the patients. So whenever in exam you are writing a question, so always remember, अगर जब BP हाई BP के साथ सीवियर प्री एक्लेम्शिया के साथ पेशेंट आएंगे या हेल्प सिंड्रोम या फिर एक्लेम्शिया के साथ, फर्स्ट and foremost first point will be BP control. So BP control will start with IV labetalol. 20, 40, 80, 80 regimen you have to give. Number 2, you have to prevent eclampsia. क्योंकि इतना ज़्यादा BP हाई है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्साइट हो जाएंगे, देन यू हैव टू प्रिवेंट एक्लेम्शिया. तो BP कंट्रोल के साथ साथ फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट मैग्नीशियम सल्फेट. सो मैग्नीशियम सल्फेट पे ड्रग्स पे अलग से देर इज़ ऑलरेडी video, so I am not going into much detail. Magnesium sulfate, how will you give? Pritchard's regimen, just read that or just see the video. So we give magnesium sulfate for BP for seizure prophylaxis. So BP control करना अलग से important है labetalol देके, and eclampsia prevent करना important है magnesium sulfate देके. Apart from that, you have to check the fetal heart rate also. ये तो मदर का हो गया. Fetal heart rate monitoring has to be done with non-stress test if patient is not in labor, and with CTG if patient is in labor. And accordingly, you have to plan for number 4. You have to plan for termination of pregnancy. Termination of pregnancy. So what will you do if patient is having only preeclampsia? Severe preeclampsia नहीं है, BP 140/90 है. Then you try to continue the pregnancy up to 37 weeks. At 37 weeks, we will induce the patient and deliver कराएंगे at 37 weeks. But if patient is having severe preeclampsia, okay, then you have to deliver the patient immediately. Urgent delivery has to be done if period of gestation is more than 34 weeks. 34 weeks के ऊपर deliver कराना है. अगर 34 weeks से कम है, then you have to give steroid cover, that is dexamethasone you have to give, and then you have to give neuroprotection with magnesium sulfate if the period of gestation is less than 32 weeks. So exam में जैसा question आएगा उस हिसाब से तुम्हारा मॉनिटर मैनेजमेंट डिपेंड करेगा. 34 वीक से नीचे है तो सिर्फ स्टेरॉइड्स, अगर 32 वीक से नीचे है तो स्टेरॉइड्स भी देना है, न्यूरो प्रोटेक्शन भी देना है, देन गो फॉर डिलीवरी. ओके, एंड इफ द पेशेंट इज हैविंग if the BP is uncontrolled, then you have to go for immediate delivery of the patient. Immediate delivery will depend on whether the cervical findings are good or not. So you do a PV examination, look at the Bishop score. If Bishop score is more than 6, then we go for augmentation of labor and deliver normally. But if Bishop score is less than 6, that is cervix is not dilated and not effaced, then you go for cesarean section. So this is all about the chapter of hypertension. I hope you have understood. If you have any queries, any doubts, you can ask me in the comment section, or anytime you can approach me. Thank you for listening to the class.